Okay, we'll start with 7 layers of networking. We are going to do 7 layers of networking. Okay, so it's a very important topic. So are you guys ready? Yes, sir. रूफी थोड़ा जल्दी अटेंड ज्वाइन कर दे जाओ. Yes, sir. Okay, I'm just opening one presentation which is made by myself. Okay, so can you see the screen? Yes, sir. So it is Yes. ISO OSI model of networking. ले लो उसका snip ले लो. So ISO stands for International Standard Organization and OSI stands for Open System Interconnect. Right? Yes, Okay, so now the networking functions can be divided into 7 layers for fault finding, troubleshooting, understanding. This is an important topic. Okay. So what are those 7 layers? These are 7 layers. How to remember the names of the 7 layers like this? All people seem to need data processing. A for application layer, P for presentation layer, S for session layer, T for transport layer, N for network layer, D for data link layer, and P for physical layer, like that. Okay, Rufi? Yes. स्निप ले लिया. yes, sir. तो कन्वीनियंस के लिए 7 layers में हमने डिवाइड किया इसको. So this is how it looks like. So if you see here,
These are 7 layers: application, presentation, session, transport. When the data is sent from your computer, it goes through 7 layers like this. And then there's switch, there's router. Switch has got 2 layers only. तो ऐसे जाएगा. Router has 3 layers. And there can be many routers. You know that when we do tracert, you see there are many routers in between. Yeah. Yes, sir. So it will go through many routers and finally it will reach the destination and it will travel up. It will reach the receiver. So normally this is how it is. All right. Yes. So actually what we use is a TCP/IP model, which is based on ISO reference model, OSI reference model. तो हम लोग ये use कर रहे हैं, TCP/IP model. So in this case, the application layer is actually made up of these 3 layers. Transport layer is this, and this IP layer, and this is network interface layer. So these two. Getting? Getting, Meenal? Yes, sir. So sending data is like, sending and receiving data is something like your postal system, as you were doing in the olden days, I will say, because nowadays we don't write letters. We stopped writing letters. In fact, letters लिखा भी किसी ने हाल में किसी को. मीनल लिखते रहती है ना लेटर. क्या मीनल? मीनल still believes in letter. मीनल? No, sir, अब तो I don't write कुछ भी. अच्छा, don't write. जो भी है ईमेल पे ही हो जाता है ना. ईमेल, व्हाट्सएप, अभी क्या लेटर की जरूरत ही क्या है? ना. If you write letter, how you are writing? You're writing taking a page from to, then letter, the matter, yours sincerely. तो header footer था ना उसमें. Header is like from to, dear so and so, ये header. Yes, sir. And नीचे from so and so. Got it. Then आप लेटर को फोल्ड करोगे, एक एनवलप में डालोगे. That envelope is another header. उसमें एड्रेस लिखोगे, स्टैंप लगाओगे. Then put it in the post box. उसमें postman आएगा. He will remove one letter from the post box, right? And he will put in his bag. Again वो दूसरा header हो गया, bag. फिर post office लेके जाएगा. Then bag खोलेगा, फिर उसको वापस से लेटर को दूसरे कोई बैग में डालेगा और वो डिलीवर होगा. It goes to destination. Then again वो खुलता है बैग. And then वो header देख के that letter is deposited or delivered to the destination. Your friend receives it. The friend will see, okay, from where it has come. He'll remove that envelope. He'll throw the envelope because the job envelope is done. Then he opens the letter. He says, dear so and so. He says, अरे dear तो मैं हूँ, क्या बोलना चाहते हो बोलो. वो भी delete करता है. And then he reads the letter. Okay, the matter in it. You agree, guys? Rufi? Yes. Yes, sir. Okay. So if you see the whole system, while sending, as the letter is going, the headers are getting added. And as the letter is getting received, the headers are processed and removed. Okay. And then the end user gets it. Getting? Yes, sir. This is what happens, right? Yes. Great. So same thing happens here. While the message is traveling from application layer to physical layer, the headers are getting added. Headers and trailers possibly getting added. And when it goes up like this, so headers is processed and removed. उसका काम हो गया.
हाँ, तो वापस से जाता है नीचे, फिर से कोई हेडर आता है, ऐसे ऊपर जाएगा हेडर निकलेगा, नीचे आएगा हेडर अटैच होंगे। यू एग्री विथ मी? फाइनली यहाँ पर जब जा रहा है ऊपर सब हेडर्स निकल के मैसेज यहाँ पर मिल गया एप्लीकेशन लेयर में। Yes. गॉट इट रूफी? Yes, sir. ग्रेट। सो इसका स्निप ले लिया आप लोगों ने? Yes. सो दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गुड। Then if you look at this is how the message looks like. The data is there, it has header and trailer. Header and trailer contains some address information, some protocol information. So each layer attaches header and trailer, which is optional while sending, and while receiving it processes it and removes it. समझा? Okay, great. So one is snip learners. हाँ, snip ले लो। Just give me one. स्निप लो, सिप आप ले सकते हैं, आप चाय कॉफी पी रहे तो सिप ले सकते हैं, ये स्निप लेना है। नहीं तो सुनोगे सिप ले लो, सिप ले लो, तो बोलेंगे सर ने बोला है सिप लो, तो फिर क्या है? सिप और स्निप में फर्क है, समझे ना आप? Yes. अब किस चीज का सिप ले रहे हो वो भी बात है, अभी ऑनलाइन में समझ में नहीं आता क्या सिप कर रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट। सो नाउ वी स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी लेयर, हर एक लेयर कैसे चलता है। तो फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर। So it interacts with the users. It is the network communication software such as email program, chatting program, Windows browser, etc. चलो इसका स्निप लो। Just I'll come back in a minute.
हाँ लिखा है अपने तो एप्लीकेशन लेयर. Yes, are you guys taken a step? Rufi? Yes, sir. So always user interaction is always with the application layer. User interaction is always with the application layer. हमेशा एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करता है यूजर, ठीक है ना. Then we have presentation layer. What the presentation layer is going to do? Okay, Minal, are you there? Yes, sir. So presentation layer will be responsible for encrypting the data because the data is going to go over the network. So if you want some security, so encryption of data, compressing the data while sending the data, you know, that is done by the presentation layer. So encryption means encoding, decryption means decoding. So actually the sender layer will do something, the receiver will do something else, right? So like this here, this application layer, the sender, this is a application layer which is a receiver. This is a virtual communication between the two. दोनों के बीच में virtual communication है. इसका बीच में virtual communication होने वाला है, right? If this guy, for example, email application लेते हैं, so application layer of the sender will write an email, and application layer of the receiver will receive the email. He will read. This person will read. You know that when you're writing email, so what is happening? You are imagining things, right? Ki the receiver is going to read the mail and all that thing. Don't you do that? Yes, sir. When we send the email, we expect the receiver to read it and respond. हाँ, बट वो आपका रिसीवर का चित्र आता है ना दिमाग में कि कौन रिसीव करेगा, वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे आता है कि Yes, नहीं आता है, उसके बारे में हाँ. सोचते कि नहीं सोचते कि हाँ. हाँ, या फिर ये सोचते कि मैसेज मेरा कैसे जाएगा, कंप्यूटर से इधर से उतरेगा, उधर से चढ़ेगा, ऐसे सोचते कि नहीं सोचते. सामने वाले एप्लीकेशन लेयर के बारे में सोचेंगे. तो वही होता है, देयर इज अ वर्चुअल कम्युनिकेशन बिटवीन द टू, राइट. तो whatever it is doing, whatever application layer, अगर application layer चपाती बना रहा है, तो if the sender application layer is making chapati, then receiver application layer what it will do? चपाती खाएगा, right? उल्टा काम कर, उसका उलट काम. So if the sender application layer will encrypt the data, so receiver application, sender presentation layer will encrypt the data. So receiver presentation layer what it is going to do? Yes. क्या करेगा बोलो, उसका एनक्रिप्शन का अपोजिट क्या है? डिक्रिप्शन करेगा, डिक्रिप्ट, एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट. सो यहाँ से एनक्रिप्ट कर रहा है तो डिक्रिप्ट करेगा वो, राइट. तो इस तरह से चलता है वो. Sir, please explain this part, encrypt and decrypt. Like encrypt means encoding and decoding that you said. Encrypt means what? एनक्रिप्ट मीन्स एनकोडिंग, मीन्स उसको डेटा को स्क्रैम्बल करेंगे जिससे कि किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या भेज रहे हैं. डेटा विल गेट स्क्रैम्बल्ड. So when it is scrambled, how does the data look like? Just it will be
like Chinese thing. Just a second. Hello. Yes, sir. हम्म, तो समझा क्या? इंक्रिप्शन समझ में आया या नहीं समझ में आया? सिंपल इंक्रिप्शन में आपको बताता हूँ, जैसे कि आई विल शो यू सिंपल इंक्रिप्शन, वेरी सिंपल थिंग आई विल शो यू। जैसे अभी जस्ट शेयर माय एंटायर स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड। ओके, सपोजिंग आई वांट टू सेंड सॉफ्ट टूल्स, सपोजिंग ये है सॉफ्ट टूल्स करके भेजना है, राइट? Sir, I राइट, can't see your screen.
क्यों नहीं शेयर किया ना पूरा स्क्रीन? व्हाइट से आ रहा है सर अब भी। वापस शेयर करता हूँ। हाँ सर, दिख नहीं रहा है वो स्क्रीन। अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ सर, यस। Let's say I want to send soft tools, right? तो if I want to encrypt it में अल्फाबेट जो रहते हैं ना, सपोजिंग ये दो दो चीज स्किप करके भेजता हूँ, जैसे एस के जगह पे एस के बाद क्या आता है, या तीन चार आगे लेते हैं, एस एस टी यू वी डब्ल्यू, राइट? तो ये डब्ल्यू हो गया। ओ के बाद पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, राइट? एस हो गया। एफ इज व्हाट? जी एच आई जे, जे। टी इज व्हाट? टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स भेजा। ओ, ओ इज व्हाट? पी क्यू आर एस, एस एस। एल, एल एम एन, एल एम, एल एम एम एन ओ पी, डब्ल्यू। तो सॉफ्ट टूल्स विल गो लाइक दिस। ये एनक्रिप्ट हो गया, समझा? he knows how it works, तो वो तो फिर उसको वापस क्या है वो भी फाइंड कर सकता है ना फिर एक्चुअल वर्ड। ये सिंपल वाला एनक्रिप्शन है, बट इससे आपको समझ में आया एनक्रिप्शन क्या होता है। ये मैंने एज एन एग्जांपल लिया। ये सिंपल एनक्रिप्शन टेक्निक है, बहुत ही सिंपल है, बट दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल्स फॉर एनक्रिप्शन, जो इतना इजी वो पीसी विल डू विद सम प्रोटोकॉल्स। डिक्रिप्शन इज अपोजिट ऑफ दैट, -4 करना पड़ेगा तो सॉफ्ट टूल्स आ जाएगा। बट ये सीक्रेट खाली वो रिसीवर को पता होगा कि क्या करना है, राइट? सेंडर को पता होगा, रिसीवर को पता होगा, बीच वालों को नहीं पता होगा। हैकर्स विल नॉट नो। The sender at presentation layer will encrypt the data using some technique, some protocol. वो प्रोटोकॉल स्ट्रांग होता है। प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि वो खाली सेंडर रिसीवर उसको एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर पाएंगे, बीच वाला कोई कर नहीं पाएगा। समझा क्या अभी आपको? हेलो? Yes sir. So encryption is when data gets scrambled and decryption is when data comes back to its original form. हाँ, तो आफ्टर एनक्रिप्शन दिस इज व्हाट हैपनिंग, राइट? Right. इसको डिक्रिप्शन करने के बाद बस सॉफ्ट टूल्स आ जाएगा, राइट? अंडरस्टूड? Yes sir. So encryption part will be done by the sender presentation layer. Decryption part will be done by the receiver presentation layer. समझा अभी? Yes sir. But Yes these sir. protocols, the protocols are very strong. वो इतना easy नहीं, जितना जैसा मैंने बताया वैसा नहीं होगा. There will be strong protocols. They are very very complex protocols for encryption, decryption. So it is almost unbreakable, right? And this is what hackers try to do. They try to decrypt. This is what? Hackers want to do. हाँ, hackers they want to tap data, भी network से जा रहा है, कहीं भी tap कर सकते हैं ना। तो when they tap the data, if it's encrypted, they will not understand what is the data. You are making the task difficult. अभी मैंने 4 का शिफ्ट किया, राइट? थोड़ी देर बाद मैं 2 का शिफ्ट करूंगा, थोड़ी देर बाद 10 का शिफ्ट करूंगा, थोड़ी देर ऐसा करते जाऊंगा। तो आई एम मेकिंग द टास्क डिफिकल्ट फॉर द हैकर। गेटिंग? Yes, sir. तो इस तरह से एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। लॉक रहता है ना, कोई जेंटलमैन रहेगा बोलेगा कि चलो ये लॉक है, हमको टच नहीं करना है। जो चोर रहेगा वो बोलता है मैं रात को आके देखता हूँ, राइट? ऐसा है उसका। एंड एवरी लॉक, इफ यू कैन लॉक यू कैन अनलॉक, राइट?
Yes. बट कितना मुश्किल कर रहे हैं आप वो इम्पोर्टेंट है. Sometimes it is so difficult that it may take 6 months to break it. तब तक वो डेटा का वैल्यू भी खत्म हो जाता है. साल भर लगेगा ब्रेक करने के लिए, तो क्या क्या मजा उसके बाद मिल भी गया तो क्या. समझा. Yes. So that is the job of presentation layer, to encrypt and also to compress the data. It can do many things. See, this is the overview. As a technical person, अभी हमको overview समझना है कि क्या करता है हर एक layer कि क्या what main functions are there. तो sender will encrypt, but sender will also compress the data. Data compress करने से क्या फायदा है? What is the purpose of compression? Compressing the data? Storage space less. Huh? Storage space is there less. Like for example, if we compress file or a folder, it takes less space, and if that, for example, in an email attachment, if we are sending a folder or file and if we compress it, it हाँ. takes less time to be Storage. sent, Yes, and correct. storage and space is also less. स्टोरेज लेस लेगा और लेस टाइम भी लेगा सेंड करने के लिए, बिकॉज ट्रांसमिशन विल टेक लेसर टाइम. Yes, because it will be a lighter file, not a heavy file. करेक्ट. ओके. बट रिसीवर प्रेजेंटेशन लेयर विल अगेन एक्सपैंड इट, Yes. सो इट विल बिकम मैसेज अगेन. सेंड किया, कंप्रेस कर, रिसीव होने के बाद एक्सपैंड करेगा. गॉट इट. Yes. क्लियर रूफी, अंडरस्टूड ना. Yes, sir. देन कम्स अ सेशन लेयर. सेशन लेयर क्या करता देखिए, अभी ये हमने सीखा है सारी चीज. पोर्ट नंबर सीखा है. व्हाट इज पोर्ट नंबर? व्हाट इज पोर्ट Yes, नंबर? sir. कैन यू टेल मी? Sir, वो it is a number in which मतलब specific address network का divide. So for जैसे हम बैंक का example दिए थे, वो हर एक डेटा जो रहता है वो वही पोर्ट पे जाता है, specific पोर्ट पे, क्योंकि वो उसी के लिए defined होता है. जैसा डिपॉजिट काउंटर का आपने बोला था कि हर बैंक्स में सेम रहेंगे, मतलब सेम पोर्ट नंबर्स रहेंगे, तो फिर वो डेटा है वही इस पे जाएगी, मतलब जब हम वहीं पे जाएंगे वही काउंटर पे डिपॉजिट कर देंगे, तो उससे ट्रैफिक रिड्यूस होगा एंड मतलब वो एक स्पेसिफिक नंबर डिफाइन हो जाएगा वो पर्टिकुलर वर्क रन करने. जैसे हमारे पीसी में हम सेवरल विंडोज ओपन करते हैं, तो हमारा डेटा वो स्पेसिफिक विंडोज तक कैसा कहाँ पे जाना है वो पोर्ट नंबर डिसाइड करता है. जैसा फॉर टाइप वाइज पोर्ट नंबर चार दिए थे ना आपने, पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 90, एनपी एनपी एनपी, तो उसके स्पेसिफिक नंबर्स है, डेटा वहीं पे जाता है. हर एक आईपी एड्रेस का स्पेसिफिक पोर्ट नंबर. Yes. Meenal, would you like to say something about port numbers? Yes, sir. So, sir, basically, there are lots of applications, and when we are trying to receive information, the data or the information needs to identify to which particular application it is coming to. So it will be the through the port number that the exact application to which the data has to be received is Correct. identified. And what is DNS? DNS क्या होता है? The domain naming system, sir. Just a second. Huh? Just a second.
So DNS, what DNS is going to do? DNS is to convert the name to IP address, right? And vice versa. And vice versa. तो अगर हम ईमेल सिस्टम का एग्जांपल ले यहाँ पर, तो सेशन लेयर क्या करेगा? वो डेस्टिनेशन ईमेल सर्वर फाइंड आउट करेगा ना, कहाँ भेजना है उसको. तो it will take help of DNS server, right? And the port number. So it will establish connection. So the job of session layer is to do that. What is the job of session layer? To establish connection with the receiver. Between sender and receiver. Between sender and receiver. Right? Clear? Yes. तो ये सब हमने सीखा है. ये तो this you know, right? So you can take a snip of this कि कैसे पोर्ट नंबर से कैसे कनेक्ट होता है. We have done this very well, right? Yes. What are standard port numbers? Rufi, remember all these things? FTP, web server. Yes. Rufi, are you there? Yes, sir. तो ये रिमेम्बर करते हैं आप सारी चीजें. स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर्स दिए ना हमने सर्वर्स को. Yes, sir. तो ये बाय वे ऑफ डायग्राम्स इट इज एक्सप्लेन हियर सेम थिंग. तो सर्वर साइड पे स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर्स जैसे 80 21. 80 is for the web server, 21 is for the FTP server, like that, right? Client side पे कोई स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर्स नहीं है. All right. Then comes the okay, done. Then we come the transport layer. यहाँ तक समझा ना? तो so I'll just summarize. Application layer is something by which the user will interact. तो user is unaware of the system under that. उसके नीचे क्या सिस्टम है वो यूजर को पता नहीं है, right? So that is application layer. Then comes the presentation layer. Presentation layer का क्या job है? To encrypt the data, to compress the data. That is the job of presentation layer. Okay. And we have seen that every layer will do something, and the receiving layer will do just the opposite of that. Yes. All right. Yes, sir. Then we have a transport layer. Session layer, sorry, so presentation layer हो गया. फिर session layer क्या करेगा? Establish session with the destination, right? Yes. Then comes the transport layer. What transport layer does is it breaks the message into small units called segments. It breaks the message into small units called as segments. So are these also called data packets? No, at the transport layer level it's called a segment. Okay. At the stage of transport layer it's called a segment. तो segment क्या करता है? The thing is why we want to do segmentation. मतलब जब भी मैसेज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएगा तो हमेशा सेगमेंट करके जाएगा. अगर एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे भी जाना है तो इट विल गो एज सेगमेंट्स. इट विल नॉट गो एज अ सिंगल पीस. इट विल गो एज सेगमेंट ओनली. ठीक है ना? एज अ सेगमेंट जाएगा वो हमेशा, सिंगल पीस नहीं जाएगा. But why
why we need to segment it? What are the benefits of segment? It's like if supposing 1,000 cars, they want to go from Kondwa to Korega Park, और सबको एक ही रास्ते से भेजेंगे तो क्या होगा? Traffic ट्रैफिक. jam. बट इफ यू डिवाइड द ट्रैफिक कि थोड़े कार्स एक रास्ते से भेजेंगे तो थोड़े दूसरे रास्ते से, तो व्हाट विल हैपन? Not traffic jam. हम्म Faster transmission. सेगमेंट में डिवाइड करेंगे हमारा हम्म डिसाइड ट्रैफिक कम होगा यस. वो ट्रांसपोर्ट ले तो सेगमेंटेशन का ये बेनिफिट है कि इट विल डिवीजन ऑफ ट्रैफिक. Some data will go from one route, some will go from other route, like that. yes That is the job of segmentation. yes That is the benefit of segmentation. So load balancing होगा, right? Number one. Number two, fault tolerance भी होगा. Less retransmission will be there. Supposing मैंने आपको बहुत सारा data एक साथ भेजा. If I send lot of data at once, so what will happen? हो सकता है उसमें कुछ डेटा में एरर आए तो रिसीवर से इट विल से भेजो, फिर से भेजो क्योंकि सही नहीं आया. तो सेम मैसेज विल बी रीट्रांसमिटेड मेनी टाइम्स टिल यू द रिसीवर गेट्स द राइट मैसेज. बट अगर हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया तो व्हाट विल हैपन कि सपोज हमने 20 टुकड़े किए सेगमेंट के, 20 में से 10 टुकड़े चले गए, सॉरी 20 में से 2 टुकड़े का प्रॉब्लम आया तो उतना ही रीट्रांसमिट करने का, पूरा मैसेज ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं. Okay, so only failed segments to be retransmitted, so easier error recovery. Getting my point? Hello, is this clear? Yes. So that is the reason we do segmentation. yes That's why message is never going as a single piece, always going as it is divided into pieces and then sent. But again, the transport layer, the sender transport layer, what it will do? The sender transport layer is going to divide the message into small pieces. The receiver transport layer will collect the segments, again make a single piece. Getting me? तो sender क्या कर रहा है? Divide कर रहा है message into small pieces. Receiver क्या कर रहा है? It's combining all the small pieces into single message again. Clear now? Yes. But transport layer, what it does, it is just adding a header. यहाँ से समझ में आएगा. इसका स्लिप ले लिया ना आप लोगों ने? ट्रांसपोर्ट ले लिया आपसे Yes. So this diagram is important. This is a very important diagram. यहाँ से एकदम perfect clear होता है. ये सारा diagram मैंने बनाया हुआ है. Actually, I have made all these diagrams while teaching students. Okay. That's very helpful. ताजा बनाए पढ़ाते पढ़ाते. उनके सामने ही बनाया सिखाते सिखाते. तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये आपका रूफी, आर यू वाचिंग? रूफी कुछ बीच बीच में बोला करो यार. Yes, sir. कंपलसरी आपको 10 मिनट में एक बार तो बोलना है कुछ तो. हाँ रूफी, Okay. तो ये एक सेगमेंट है, उसको एक हेडर अटैच किया ट्रांसपोर्ट लेयर. हेडर में क्या दिया? सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट नंबर, मतलब एप्लीकेशन की जानकारी दी कि कौन से पोर्ट नंबर सोर्स मशीन में, कौन से पोर्ट नंबर से चल के डेस्टिनेशन मशीन में कौन से पोर्ट नंबर में डेटा जाएगा. सो दैट इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन द हेडर ऑफ द सेगमेंट. सो ट्रांसपोर्ट लेयर में ये जो प्रोसेसिंग डेटा यूनिट कह सकते हैं इसको, पीडीयू, दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंट at the transport layer. Is this clear to you? Meenal, clear? Sir, I'm trying to understand thoda. But when it goes to the next layer, what is the next layer after transport layer? Which is the next layer? Which is the next layer after transport layer? The network layer. So what network layer does is, it will, Sir, give
give me 1 minute. I'll just take 1 second. Let me see. I've taken the snip of that. 1 minute. Yes, I have taken the snip. Okay. So, एक बार फिर से you can explain this one, please. This data. This The example. transport layer, what it is doing, transport layer is dividing the message small units called processing data unit, PDU. Processing data unit, PDU, right? So, but हर एक processing data unit के साथ वो एक header attach कर रहा है. Header में क्या mention करेगा? Source port number and address information, port address. From which port this message is starting and at which port it is going to reach in the destination computer. So both port numbers are there in Edge. header. Yes. कहाँ से जाना है, कहाँ से आया, कहाँ तुझे जाना है, वो गाना है ना, वैसे इधर अप्लाई होता है. ठीक है ना? Okay. From and to. From and to. From application and to application. Port number in very simple sentence you can say it's an application address. Yes. From and to. Yes. From and to, like this, correct? Yes. Sir. So when you add this information, then it is called as a segment. फिर segment हो गया. Then if you take this segment, you add what the next layer will do is network layer. इस segment पे और address information add करेगा. इसने क्या दिया? From to application, right? इसने क्या दिया? From to IP address. What is the from IP address? What is the to IP address? So this next layer will treat this whole thing as data. ये पूरा as a data treat करता है. उसके लिए data मतलब पूरा चीज, पूरा segment is a data और उसको और एक header attach कर दिया. इसमें IP address डाला, source destination IP address. So at network layer it is called as packet. Network layer पे इसको packet बोलेंगे. Getting Meenal now? Yes, sir. Now. जो extra part होता है वो भी data ही रहता है क्या? वो जो header He will treat it as a data. अच्छा. The network layer will treat the entire thing जो उसको ऊपर से आया है, उसको डेटा समझता है और उसको और एक हेडर अटैच करेगा. और एक header नीचे फिर और एक header. So this called as data encapsulation. Encapsulation. जैसे आपने एक रैपर पे और एक रैपर लगाया, तो encapsulation. Yes. टेक्निकल भाषा में इसको हम encapsulation बोलेंगे. Data encapsulation. Got it? Then we have the next layer will again treat the whole thing as data. And then it will attach header and trailer. Header में क्या डालेगा? Physical address. What is the source physical address? What is the destination physical address? So what is physical address भी हमने देखा, MAC address, if you remember. Yes. We studied about MAC address, correct? Hello, Meenal and Rufi, MAC address के बारे में देखा था हमने. Sir, your voice is breaking. Yes. So MAC address is attached here. So it becomes frame. And it will also attach one trailer. Trailer में it will put something known as frame check sequence. Some error checking information. Okay, Rufi, MAC address पता है आपको, Rufi? Yes, sir. बोलो, what is MAC address then? What is a MAC address? So virtual address given to everything. जो बोलना है. Well, it is the address which is assigned to the network. Yeah, Meenal, you tell me. Sir, MAC address is media access control. And it is in hexadecimal system. And for a computer, we always call the physical address as a MAC address.
गूगल करके देख रहे क्या? नहीं सर, आपने जो पढ़ाया था उसमें से ही। ओके। मीडिया एक्सेस कंट्रोल सर 12 कैरेक्टर का होता है क्या? 12 हेक्स डिजिट्स। फिक्स होता है और वो पीसी जब हम खरीदते हैं उसके साथ ही आता है वो हर एक नेटवर्क इंटरफेस को एक मैक एड्रेस होगा। इट्स यूनिक थ्रू आउट द वर्ल्ड। Yes. तो मैन्युफैक्चरर ने असाइन किया होता है, बट आजकल वो भी चेंज कर सकते हैं। देयर आर फैसिलिटीज बाय विच यू कैन चेंज द मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस ऑफ अ सिस्टम। ओके, बट आइडियली इट शुड बी यूनिक इन द वर्ल्ड, सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। तो पैकेट इज अगेन एनकैप्सुलेटेड इन द डेटा फ्रेम। तो पैकेट को फर्दर एनकैप्सुलेट हुआ। डेटा लिंक क्लियर क्या करता है, उसको फिजिकल एड्रेस अटैच किया और एक ट्रेलर अटैच किया। ट्रेलर इट इज गोना पुट अ फ्रेम चेक सीक्वेंस। ओके, frame check sequence contains some mathematics by which it is going to, ये सारे इसमें जो भी है whatever is given here उस पे कंप्यूट करके मैथमेटिक्स लेके वो यहाँ पर स्टोर करेगा। so that is frame check sequence, that is the job of frame check sequence। तो एक फॉर्मूला के तहत वो स्टोर करता है, और जब रिसीवर को जब ये डेटा मिलता है तो he will do the same thing। रिसीवर will again calculate, do some mathematics and calculate the FCS। तो जो सेंडर एफसीएस एंड रिसीवर एफसीएस मैच होना चाहिए। मैच हो गया मतलब डेटा इज करेक्ट। मैच नहीं हुआ मतलब समथिंग हैज चेंज इन द डेटा, सो इट विल रिजेक्ट द फ्रेम। इन दैट केस इट विल रिजेक्ट द फ्रेम। गेटिंग? अंडरस्टैंडिंग मीनल? Yes. Sir, this frame and main frame, are they the same things or different things? अरे यू आर टॉकिंग व्हाट? Different, na? potatoes and tomatoes, they are different, my dear. Yeah. I just thought to check. मेन फ्रेम तो सिस्टम हो गया, ये तो फ्रेम इज अ डेटा। ये Basic. डेटा को फ्रेम बोला है। So at data link layer, the data is in form of frame। ये सारे जो layers है, for transport layer data is in form of segments। Network layer will treat the data as packets। Data link layer will treat the data as frames। Okay. Are you getting me? Sir, transport mein data is layers. Then, yeah. Then in network, the data is considered as segments. Network में it is considered as packet। तो हमने देखा ना वो, एक मिनट, just I'll again come back here। Segment, packet and frame like this। So यहाँ पर क्या लिखा? Network layer encapsulates segment into packets and data link layer encapsulates packet into frames। Getting? Yes, तो इस तरह से होगा वो। Encapsulation, you understood what is encapsulation? Cover, yes, sir. Cover. Yes, sir. right? Yes, sir. ये तो ये चीज आपको अच्छे से समझना है, राइट? ले लिया स्निप इसका? Yes, sir. ले लिया। Yes. Sir. Now ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट है which are very famous, जैसे हमने देखा इसमें। See, for every layer there are protocols। Protocols is way of doing things, right? हर एक लेयर कुछ काम कर रहा है, but that same thing can be done in different ways। So ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल अगर आप देखेंगे इसमें, सॉरी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल, इट्स लाइक HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, ये सब application layer protocols है। But for transport layer we have only two protocols, which is TCP and UDP। Yes, sir. So how they work, that we have to understand। So for that,
This transport layer. Transmission control protocol. UDP means user datagram protocol. ऐसा है, ठीक है ना? Connection oriented protocol, connectionless protocol. Reliable with acknowledgement, unreliable without acknowledgement. Flow control, no flow control. Slow, this fast. Net banking, chatting, video conference, DNS like that. So what is the difference between the two? जो आपका TCP protocol is connection oriented, reliable with acknowledgement. जैसे आप बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, so you want to be sure कि आपका जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, you need acknowledgement, correct? एक acknowledgement की जरूरत है, वो that is very important. But if you are chatting or if you are talking to someone on phone, तो वहां पर थोड़ा कभी कभी वॉइस ब्रेक भी होता है, तो भी चलता है ना, वो यूजर ही पूछ लेता है, अरे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो, वो खुद ही कंट्रोल होता है. बट अगर नेट बैंकिंग है उसमें थोड़ी ना होगा, वो तो हाँ, तो मशीन हैज टू गिव एक्नॉलेजमेंट, तो वहां पर टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होगा, बट थोड़ा स्लो चलेगा, बिकॉज हर एक वो रुक रुक के चल रहा है, या इट इज बोलते हैं ना, हर एक कदम वो फूक फूक के चल रहा है, बोलते हैं ना वैसे. तो TCP is little slow, but it's very reliable. UDP protocol you will use where you don't need so much reliability. You want just speed. जैसे आप voice chat हो गया या video conference हो गया, तो we want speed there. UDP है. Correct, very good. Teams is UDP because कभी कभी ब्रेक हो रहा है, तो भी वो वहां से मीनल चिल्लाती है ना, सर ब्रेक हो रहा है करके, वॉइस है ना. क्यों मीनल? Yes, sir. मीनल बोलती है, रूफी सुनता है, खाली ब्रेक होता है तभी बीच बीच में, उसमें सुपर पावर्स है, उसको ब्रेक में भी समझ में आता है क्या बोला, है ना रूफी? रूफी कुछ तो बोलो भाई, क्या है तुमको? सर ये इंक्रिप्शन 1 साल बाद हुआ, वैल्यू खत्म हो गया. है क्या मीटिंग में? ओके, चला गया, क्या हुआ है उसको? काम तो है सर. रूफी, आर यू देयर? गया होगा, पानी पीने गया होगा. यस सर. अरे इतना देर से क्यों रिस्पॉन्ड करते रहे, कब से बोल रहे हैं? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बीच बीच में कट रही थी. अच्छा देखो, अभी बोल रहे हैं. इसलिए ऑफलाइन आ जाओ ना तुम, क्यों ऑनलाइन कहते? कितना नजदीक रहते हैं, आने का ना ऑफलाइन. ये आ रहा है ना रियान, तो ऑफलाइन ही आता है, आप भी आ जाओ ऑफलाइन. सर अच्छी आवाज आ रही है अभी. अभी अच्छी अभी अच्छी आ रही है, ऑफलाइन बुलाया तो अच्छी आने लगी. चलो ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड. इसमें टीसीपी में फ्लो कंट्रोल भी होता है. फ्लो कंट्रोल मतलब क्या, कि अगर डेटा बहुत फास्ट जा रहा है, रिसीवर की कैपेसिटी नहीं है उसको कलेक्ट करने के लिए, तो फ्लो कंट्रोल. ओके. यूडीपी में कोई फ्लो कंट्रोल नहीं है, वो गया तो गया, नहीं तो नहीं गया. ऐसे वॉइस गई तो गई, नहीं तो नहीं गई. वापस से वो सामने वाला बोलता है, यार वापस बोलो, राइट? या अगर मैं बहुत, या ये भी बोलेगा थोड़ा धीरे बोलो, मतलब यूजर ही बोल देगा, राइट? तो उसको सिस्टम को करने को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, राइट? सो टीसीपी विल बी ऑलवेज लिटिल स्लो एंड यूडीपी विल बी फास्ट. क्लियर? उसका एप्लीकेशन भी पता है कहां पर यूज होता है. अंडरस्टूड मैडम? क्लियर? देन नेटवर्क लेयर मैंने आपको बता ही दिया इसमें कि it encapsulates the segments into packets, right? कवर चढ़ाता है उसका थोड़ा सा इसको. हाँ स्मॉल मिनिमल. हाँ. So it will encapsulate the segment into packets by adding source and destination IP address. Okay, so router inspects these headers to make routing decisions. आपने routing सीखा है, right? तो routers हमेशा ये header check करके उसको समझ में आता है कि कहाँ भेजना है.
उसको डेस्टिनेशन नेटवर्क पता चलता है ना फिर। तो राउटर हैज राउटिंग टेबल and from that it decides, it knows where to send the data. All right, and then you have data link layer. Data link layer, ये भी मैंने आपको बताया, it encapsulates the packet into frames, right? Yes, sir. It uses ARP to learn physical address of the next hop. It also adds a trailer containing FCS, frame check sequence, is responsible for error detection because FCS add किया हुआ है ना इसके लिए। वो लास्ट वाला लेयर जो था सेकेंड लास्ट। सेकंड लास्ट वाला। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट हॉप के लिए। तो एक्चुअली फ्रेम जो है हमेशा चेंज होगा। तो ये समझने के लिए डेटा लिंक लेयर का फ्रेम कैसे चलता है समझने के लिए आई टेल यू वन स्टोरी। आर यू गाइस रेडी टू लिसन टू अ स्टोरी? Yes. यस। हाँ, तो देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड मिस्टर अब्दुल। ही वाज स्टेइंग इन कोंडवा, ओके, नेक्स्ट टू रियान्स हाउस, between Rian's and Rufi's house, and he wanted to go to Dubai, right? तो he knows the logical address कि मुझे यहाँ से कोंडवा से दुबई जाना है, तो that is like IP address। उसके शोल्डर पे लिखा है मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? क्या करना पड़ेगा? फिजिकली उधर जाने पहले वो टैक्सी करेगा यहाँ से, वीजा वगैरह मिल गया समझो, फर्स्ट टैक्सी करेगा। टैक्सी कहाँ से कहाँ तक करेगा? To airport. हाँ, टू एयरपोर्ट। वो कोंडवा से एयरपोर्ट तक टैक्सी, तो दैट टैक्सी इज अ फ्रेम। वो टैक्सी में बैठेगा ना, जब टैक्सी में बैठेगा टैक्सी के आगे क्या लिखा रहेगा? कोंडवा टू एयरपोर्ट। सो दैट इज फिजिकल एड्रेस। तो फ्रेम में ट्रैवल करता है। यस, ही रीचेस एयरपोर्ट। एयरपोर्ट इज लाइक अ राउटर। तो वहां पर उतर जाता है टैक्सी से, टैक्सी छोड़ दिया, फ्रेम छोड़ दिया, वापस पैकेट बन गया। अभी राउटर मतलब एयरपोर्ट पे राउटिंग टेबल है या टेबल है कि कैसे जाना आगे। वहां पर देखता है हाँ ये फलानी फ्लाइट है, मेरा रीजनेबल है फ्लाइट, तो फ्लाइट कैच करता है। तो फ्लाइट लेकिन दिखता है कि वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, पहले उसको सऊदी अरेबिया जाना है, तो सऊदी अरेबिया की फ्लाइट देखता है। देन ही सिट्स द फ्लाइट, तो फ्लाइट अगेन फ्रेम बन गया। तो व्हाट इज द सोर्स एड्रेस, फिजिकल एड्रेस? पुणे एयरपोर्ट। व्हाट इज द डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस? सऊदी एयरपोर्ट। तो फ्रेम में गया, वो फ्लाई किया, सऊदी एयरपोर्ट में लैंड किया, आ गया सऊदी एयरपोर्ट पे, वापस उतरा, वापस पैकेट बन गया, फ्रेम छोड़ दिया। अभी वहां पर वापस से देखा टेबल कि कौन सा फ्लाइट अच्छा है, खर्चा कम लगे, आराम मिले, बजट में रहे, दैट इज प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल यूज करके वो देखता है कि हाँ ये फ्लाइट अच्छा है, वो फ्लाइट में बैठा, अगेन ही इज बिकम फ्रेम, एनकैप्सुलेट हो गया। फ्रेम का फिजिकल एड्रेस क्या हुआ? सऊदी एयरपोर्ट टू दुबई एयरपोर्ट। फ्लाई किया, दुबई में लैंड किया, वापस उतरा, वापस पैकेट बन गया, वहां पर वापस टैक्सी लिया, दुबई एयरपोर्ट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, वापस फिजिकल एड्रेस ऐड हो गया, वापस उतरा, वापस पैकेट बन गया। वहां पर फिर वापस देखा कौन से फ्लोर पे है, लिफ्ट में गया, लिफ्ट इज अगेन फ्रेम, ओके। या उसको मालूम नहीं हो तो चिल्लाएगा जो से, अरे वेयर आर यू माय डियर, आई हैव रीच्ड हियर। वो बोले अरे लिफ्ट पकड़ के इधर आ जा, मैं ये फ्लोर पे हूँ, मेरा हाउस नंबर ये है। सो दैट इज एआरपी प्रोटोकॉल। ये जो एआरपी मैंने लिखा है ना, जब पैकेट जाता है तो उसको फिजिकल एड्रेस पता नहीं किस कौन से सिस्टम है, तो वो चिल्लाता है कि भाई लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस सो एंड सो, वेयर इज योर फिजिकल एड्रेस, व्हाट इज योर फिजिकल एड्रेस, वो देता है, फिर फ्रेम बन जाता है, फिर जाता है उधर। तो यहाँ पर ये लिफ्ट में बैठा, लिफ्ट इज अ फ्रेम, उधर गया, उसके घर तक नॉक किया, उतरा तो वापस पैकेट बन गया, एज अ पैकेट ही गॉट डिलीवर्ड देयर। समझा? क्लियर? Yes. तो इस तरह से फ्रेम हमेशा चेंज होगा। ये स्टोरी ध्यान में रखना, भूलना नहीं। समझे? मीनल क्लियर? Yes. रूफी क्लियर? स्टोरी समझ में आई?
Yes, Rufi. Rufi, Yes, then sir. physical layer को will treat the data as zeros and ones. काला अक्षर भैंस बराबर. उसको कुछ मालूम नहीं है. वो it will just translate from आपका जो कंप्यूटर डेटा है वंस एंड जीरो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल या वायरलेस सिग्नल में या ऑप्टिकल सिग्नल में ट्रांसफर करेगा, ट्रांसलेट करेगा. यहाँ पर फिजिकल लेयर से जब डेटा जा रहा है तो राइट. Yes, sir. तो इट विल जस्ट इट्स जॉब इज जस्ट टू convert into proper voltage levels, proper wireless signals, proper light signals if it is optical medium, and it will transfer the data. Yes, sir. That is physical layer, right? Yes, sir. तो physical layer का भी snip ले लिया आपने कि नहीं लिया? नहीं ले लो, physical layer का भी ले लो भाई. क्या तुम्हें snip क्या? Physical layer. ले लिया मैडम? No, sir, 1 minute. Yes, sir. Good, good, very good. तो I have explained you all the 7 layers. इसको revise करो जैसे आता. This is very important, right? Yes, sir. Yes, sir. और ये समझ लो हर एक लेयर के अलग अलग प्रोटोकॉल्स है. अगर वायरलेस है, वायरलेस के भी काफी सारे प्रोटोकॉल्स है, राइट? Yes. So every layer has got number of protocols. Clear? Yes, sir. Okay, good. So I hope you understood today's lecture. Yes, sir. Yes, sir. Just a second. ठीक है, इसको भी मैं YouTube पे